Okay, so I guess we are live right now. Okay, guys, let's start our session today. Uh, so many of us don't have Photoshop, so you can download it from here. I have given this link in the chat box. Again, I am giving it to you. You can download it and you can install it. It's a cracked version, so there will be no problem of subscribing and subscription and anything. So yeah, let's just start with the Photoshop. When you will open the Photoshop, this is the interface you are going to look at. ये आपको वो दिखेगा खोलते के साथ. तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज we have to create the project file, right? The canvas on which we will going to draw, or we will going to edit everything. So it depends on the thing, on the poster that you are going to make. And like जैसे कि if we are making for Instagram, there are few things we have to keep it in our mind, like the aspect ratio. Instagram allows in many aspect ratios, like 1:1, 4:5, and there are many other things. So अपन को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. बेसिकली जहाँ तक मैंने देखा, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने बनाया, अपन 1:1 प्रेफर करते हैं, एंड उसका रेजोल्यूशन होते हैं 1080 by 1080. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक. Now you can see this interface. Either we can write the width, that is 1080p, and here the height, that is 1080p. So this will become a box like structure, 1:1, and resolution we can put it like 300 pixels per inch. Basically it gives that richness. मैं आपको प्रेफर करूंगा आप 300 ही रखे. यू कैन गो विद 72 एज वेल, बट वो थोड़ी सी लो क्वालिटी हो जाता है. ओके, तो फॉर लेट्स जस्ट गो टू 300. एंड वन मोर थिंग, जैसे वी नो दैट इंस्टाग्राम के लिए अपन को 1080p by 1080p चाहिए रहता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट वी शुड मेक इट 1080p ओनली. क्योंकि वी नो इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे यूज टू कंप्रेस आर इमेजेस, राइट? तो अगर अपन ऑलरेडी थोड़ा छोटा मतलब उसके साइज का बना रहे हैं, वो फिर भी कंप्रेस करेगा. मैंने अब तक के एक्सपीरियंस में बेस्ट रिजल्ट्स तब देखे जब आप उसको जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाए, राइट? तो वो कंप्रेस करने के बाद में थोड़ा ही कंप्रेस होगा. सो लेट्स से जैसे इसका साइज होता है 1080p, वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2. You can do it like this, multiply it by 2. तो नाउ जो कैनवा, जो अपना आर्ट बोर्ड है, उसके विड्थ और हाइट हो गई है 2160 पिक्सेल्स, राइट? सो जस्ट हिट क्रिएट एंड this is what you will get. You can check by going in, you can see over here, right, that it is 16 200 2160 pixels cross 2160 pixel 300 पिक्सल पर इंच. ओके गाइस, तो ये है. आप जब फर्स्ट टाइम फोटोशॉप खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा. अभी मैंने बेसिकली इंस्टाग्राम की बात की, इंस्टाग्राम के पोस्ट की बात की, बट आप कोई से भी उसमें जो आपको नेसेसरी है, आप उसके हिसाब से आप अपना वर्क स्पेस, वर्क आर्ट बोर्ड बना सकते हो, राइट? तो अभी मैं डेमो दे रहा हूँ, सो वी कैन गो विथ इट. तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखेगी, राइट? ये अपना सिलेक्शन टूल होता है. वैसे चाहूँ तो मैं एक एक करके सारे टूल्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, राइट? ये आपको ऐसे थोड़ा थ्योरी टाइप लगेगा. इट विल बी लाइक कि ये सिलेक्शन टूल है, ये दूसरे टाइप का सिलेक्शन टूल है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये ब्रश है, ये इरेजर है, ग्रेडियंट टूल,
ये सब याद करना और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। ओके, तो अपन अ, एक काम करते हैं। हम्म, अपन एक पोस्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या प्रैक्टिस मतलब बनाते बनाते सीखना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा कि क्या होता है कैसे होता है, राइट। आई गेस अपन में से बहुत सारे एकदम फ्रेशर है, लाइक दे हैव नेवर यूज्ड फोटोशॉप, एंड अपन में से कुछ कुछ जने हैं जिनको फोटोशॉप क्या होता है कैसे यूज करते हैं दे नो इट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे जैसे अपन बनाते जाएंगे कि ये टूल क्या है, ये कैसे यूज करता है, इसको उसको कैसे यूज किया जाता है एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। तो टुडे इज 27, राइट। टुमारो आई गेस देयर इज नेशनल साइंस डे। या सो लेट्स मेक इट ऑन अ नेशनल साइंस डे, राइट। तो सब बेसिकली सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि नेशनल साइंस डे है, मेरे को इस पर पोस्टर बनाना है, तो व्हाट शुड आई मेक इट। ओके, तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नेशनल साइंस डे, अगर आपको पता है इस डे के बारे में क्या है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो सबसे अच्छी चीज़ मैं यही बोलूँगा, आप गूगल पे जाओ, टाइप इट एंड इमेजेस में सर्च करो बेसिकली क्या आ रहा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि क्या होता है, कैसे लोगों ने ऑलरेडी पोस्टर बना रखे, कैसे होते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ से आप बेसिक आइडिया ले सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में। व्हेन वी स्टार्ट, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एकदम बहुत अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। यू कैन स्टार्ट इट विथ सीइंग अदर्स वर्क। आप दूसरों को देखो, ऑब्जर्व करो कि उनने क्या बनाया, कैसे बनाया, उनने क्या कलर थीम यूज की, राइट। तो अपन को एक बेसिक आइडिया मिला कि नेशनल साइंस डे क्या है। बेसिकली ये सीवी रमन इनसे रिलेटेड है, आई गेस इनका नाम सीवी रमन ही है। या ओके, तो वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग लाइक एक कलर स्कीम आप पहले सोच सकते हो, जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई शुड गो विथ समथिंग लाइट ब्लू काइंड ऑफ थिंग। तो आप पहले इसके ऊपर आ जाइए। ये जो ये जो होता है, इससे आप कलर पिक कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द कलर, like just select the color that you want. I want to go with some this shade of blue. Okay, and then now you have two options to fill it. Like you can make a new layer, and you can, after clicking on this plus button, you can make a new layer, right. Like again, how many times you will click, that many new layers will be generated. Okay, you can make a new layer from here, and you can choose brush tool, and you can click on right and you can select different type of brush from here. What we have to do it, you can choose a brush tool from here, you can click right and you can choose the brush you want. Right now we want a hard tool, hard brush. What does, how is different from other brush, like this is a hard brush and this is a soft brush. You can see that in the hard brush the edges are hard, and the soft brush it's very subtle and soft in shape, whatever we say. So right now we need a hard brush, and you can just select a hard brush and you can color your whole canvas or your whole artwork. This is one way. You can do it in another way also, like you can just make a new layer, or you can place alt and backspace. वो जो foreground जो, here you can see two squares, one is filled with blue color and another is filled with white color, right. तो जो ऊपर वाला है उसको अपन foreground कहते हैं. You can also read its written for set foreground color, right. When you will hover over it, uh, जो ऊपर आ रहा होता है उसको foreground कहते हैं, and जो पीछे वाला होता है उसको background color होता है, right. See, it's written over there set background color. तो आप जैसे ही alt and backspace दबाएंगे,
तो आपकी पूरी स्क्रीन, पूरी लेयर उस फोरग्राउंड कलर से फिलअप हो जाएगी. So in a one click you can do it like this, alt and text press. There you go. Okay. And you can get some. After this what we can do is we need some images, like we are having a topic like National Science Day. तो बेसिकली साइंस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मे बी सम बीकर्स, और मे बी सम carbon bonds and organic structures, chemistry, something like that, or physics. uh, so that, and one more thing, we can make two types of poster. The first one is the vector art, or there's a modern looking illustration poster, and another one is that we can use CV Raman's photo in that, and we can make a poster in that way. Okay, so first, we will do both the things. We will try to make both of the things, and we will see which one is looking better. So yeah, we can go on Google and we can search microscope illustration. Okay, mhm. I like this one. काफी अच्छा सटल सा लग रहा है, काफी कलरफुल भी है. So you can just click on save image as, and this will get. Okay, you can directly copy image, and just right click over here and copy image, and you can go to Photoshop and you can press Ctrl V. What we have to do, you have to just copy from the web, copy image, and you can press Ctrl V to paste it. Okay, so the size of that image is very small. You can make it large by selecting the layer. See, this layer 2 is the photo that we copied from the web, right? Just click on the layer and press Ctrl T. Ctrl T, it helps you to transform the layer. तो ये ऐसा शॉर्टकट्स होता है, जैसे टी से ट्रांसफॉर्म होता है, सो इट्स बेसिकली कंट्रोल टी. एंड नाउ यू कैन make it large or make it small. Just try, just press control, just press shift and alt. तो ये बीच में से बड़ा होगा, लाइक अगर आप सिर्फ alt प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे, तो मतलब सिर्फ ऐसे ड्रैग करोगे तो कोई भी ऐसे, इट कैन इंक्रीज इन विड्थ और इट कैन इंक्रीज इन height. But if you click alt, uh, if you click shift, then it will increase in a ratio. जो उसका ओरिजिनल रेशियो है ना, वो स्ट्रेच होगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में. तो आप शिफ्ट दबा के इसको स्ट्रेच कर सकते हो, तो ये ऐसे बड़ा होगा. अगर आप शिफ्ट दबा के ऑल्ट दबाते हो, अगर शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों दबा के स्ट्रेच करते हो, तो बेसिकली ये बीच में रह के बड़ा होगा. लाइक राइट नाउ इट्स increasing its size in all the direction. You can see it. So let's make it this size. And अब ये बहुत ज्यादा हार्श सा लग, मतलब अपन को इसको, वी वांट टू यूज इट एज अ बैकग्राउंड, राइट? बट इट्स टेकिंग so much attention. So what we can do is we can decrease the opacity. You can decrease the opacity. So the another new thing you can see is this opacity button. You can just left click over here and you can drag your mouse to increase and decrease your opacity, or you can press this down arrow button and you can drag it like this and you can adjust the opacity, or you can manually type the amount of opacity you want. Like if you type it 70, then it will look like this, and if you want to decrease it more, then you can write 50, and you can go with any number that suits the scenario. For this I think I will go with something 45 maybe, or 40. 40 is good. Okay, seems good. Let's proceed. So now we are having a background. Okay, now we can
work on the content which we want to write on the poster, right? So so let's start typing some text, and let's see. uh, yeah, so this is the another tool which you should know. uh, you can see this T button, T like icon. When you will click on this, you will get this cursor. Now wherever you will click it, and you can, now you can type whatever you want to type on the poster, like let's type national, national. Let's keep it only national, and yeah. So right now you must be thinking it's very small, how to increase the size. So here you have two ways in which you can increase the size. First of all, you can just select this layer. By default it is selected. You can press Ctrl and T, and then you can increase it like this. Okay, this is one way. In this way you can increase the text. Another way is you can just select this layer, and you will get this property option over here, right? Here it is given the font type which you want to use. By this time I will go with the Weber's new. It's like looking nice. And from here you can increase the size of the text. Okay, so here I if you click on 72, it will increase the size. Or you, if you want to increase it more, then you can type the number by yourself. Like I can type something like 100. It will be very big. Let's decrease something like 72 will be okay. uh yeah. So like, and another thing is like you can see a line which is helping me to align my text in between. If you are not getting this, you can basically do you can go to your windows, and there will be a no, it will be here. Yeah, just select this layer. Okay, just click on this triple dots and use canvas. Now you can click on this button to make align it in between in horizontal wise. And if you click on this button, it will help you to align in between the vertical wise, like this. Let's say your text is over here and you want to align in between. You just need to just press over here and just do it. It will automatically come in between. So yeah, let's just position this thing over here, national. And we need one more text like National Science Day, right? Now again you have now again you can go to this text button, and you can again start typing SCINC Science Day. Okay, another way is like you don't need to do it again and again. You just hover over your this layer, press Alt and drag it. So it will make a copy of that text, and now you can write it whatever you want to write. Okay, so in this way you can write text. uh, mm, I guess we can change the color. uh, uh, I have seen many people doing some mistakes, like they, if they want to change the color, they will go with some harsh RGB, what we say that rainbow colors, like 100% red, orange, or blue, or green, or some people likes to be black. So if it make it black, I guess it's not looking that much good. You can do one thing. Just pick a color from the background itself, like a little darker or a little lighter version. So just you can select a text, like double click on it, and it will select the whole text. Or you can do it like you can just select this layer and go to this property tab,
and then you can choose some nice dark color. Okay, cool. I think it's looking nice, and I guess we should decrease some size of this text. Okay, cool. Looks nice to me. Okay, let's making little bit more darker and bluish. Mm, okay, cool. So by the time we are having our main text, that is National Science Day, now we can start working on the like जो बाकी के छोटे elements होते हैं, we can start working on them. So basically, uh, the most important thing is our logo, right? You can just import the logo. You can just drag your logo to Photoshop like this and place it. So by the time, I guess this is very big, and maybe you will be thinking how to resize this, and many of you must have such guessed it right. Like we can press Control T, and then we can click Alt and Shift, and we can drag it to resize it, and then you can drag it to the place you want. I guess it's looking nice. Okay, cool. So let's type some text. uh, what we can type is we can type. So what I did is I just pressed the Alt and I just dragged this text. Okay, and here I can type is 28th, 28th Feb, or we can write 2022 if you want, but I think 28th Feb will be fine because years I don't think it डालना सही रहेगा. And you can select now you must be thinking कि ये 28 तो it मतलब ये th तो 28 के ऊपर आना चाहिए, and वो अपन कैसे करेंगे. You just need to do, you just select this type tool and just select this key edge. How to select, बस आप उस पर रखो and उसको आप drag कर लो, right? And you can go to this property tab and this type option. You will be getting this type option. You can see if I click on this तो वो नीचे चला जाएगा. Mm, that size will get little small. If I click on this it will go to up. If I click on this it will go to down, and if I click on this वो underline हो जाएगा. तो ये बहुत सारे options है. You can see it and आप इसके साथ experiment कर सकते हो कि कौन सा क्या करता है, कैसे करते हैं. तो we have to make it like this, 28th Feb, right? And let's change the color. अपन को सब इतना dark नहीं रखना है, I guess. Let's make it white. And basically जो main अपना focus है, we want it to be on this National Science Day. ये तो अपन just for a small detail we are making it, we are typing it. So we can make it very small, something like you can select this layer and you can go to this option and then you can click on something like this to make it small. It's I guess it's very small right now, so we can increase the size like 16 pixel. Oh, okay, that's it. Increase it a little bit more, 18. Cool. So you can center it like this, and I guess मेरे को uh, you can see this option, this VA. What basically does is it increases the space between your letters, right? Right now, if I click on 0, then this will come very close to each other. If I click on 200, then they will become little bit apart. And you can still increase like you can click on the button and you can now drag it. See, as I increase it, as I'm moving my cursor to right side, the space is increasing. If I'm moving my cursor to left side, the
the space is decreasing. In this way, you can change the internal spacing of the letters, right? Right now, I want to go with 200. It's looking fine. What other we can do is we can draw a line. Okay, so we can use pen tool. Uh, you can find pen tool over here. This is a pen tool, or you can press P on your keyboard to get it activated. See, right now I'm having my normal cursor. जैसे ही मैं P दबाऊंगा, it will change to pen tool. It's a shortcut. Okay. What this pen tool does is it helps you to draw a vector shapes on your artboard, right? Like if I click over here and if I click over here, see you can see a straight line. It's not a straight, it's little bit tilted. But yeah, in this way you can make different types of lines. So this is how this pen tool works. Right now we want a straight line, right? So you can press shift to make it a straight line. See, I will show you again. If you just press it like a way this way, it may be straight or it may not be straight. It totally depends on the position of your mouse. But if you click, see my cursor is little bit up, but still if I press shift and click, then it will automatically make a straight line, right? It with the help of this, even you can make a tilted like 45 degree. जैसे आप थोड़ा भी थोड़े ज़्यादा एंगल पर रख के इफ़ यू क्लिक शिफ्ट एंड प्रेस द बटन, सी ये 45 डिग्री को ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन बना कर देगा. So yeah, let's make a straight line. I just want a straight line between this. So let me draw a line from here to here, and I think it's little bit thick. So let's just decrease the size. You can see this whenever you will select this pen tool, you will get these options over here. With the help of this, you can change the type of line. Like if you click on this will become a dash line. If you click on this, then this will become a dotted line. So I want to go with a straight line and I want a little thin. So what I can do is let's just decrease opacity. Yeah, I think it's fine. And now I want to change the color. So you can see the two options over here. The first one is fill and the another one is stroke. Basically it's a straight line, so there is no fill. एक स्ट्रेट लाइन में आप कोई भी कवर एरिया कवर नहीं करते, इसके उसमें अभी कोई कलर नहीं है. अगर इसकी जगह अपन ने कोई क्लोज्ड फिगर बनाया होता तो उसके अंदर एक फिल होता, कलर होता. तो एक स्ट्रेट लाइन का तो कोई क्या बोलते एरिया एनक्लोज करता नहीं है, तो अभी कोई इस पर फिल नहीं है. एंड दिस स्ट्रोक बेसिकली जो उसकी आउटलाइन होती है, जो बॉर्डर होती है, उसका कलर होता है. सो आई वांट इट अ वाइट कलर. सो यू कैन click over here and you can choose a white color from here. Yeah, and right now I'm using my cursor, arrow buttons to make it align like yeah. So right now you will be thinking that ये line तो इसको overlap कर रही है, it's not looking good or it's not readable, I guess. किसी को समझ नहीं आएगा कि इसके पीछे क्या लिखा है. So the another thing we can do is we can mask it, right? अपन इसको हटा सकते हैं इसके ऊपर से. कैसे? So we have a one way that is called masking. You can see this button. ये आपको नीचे राइट साइड में एक बटन दिखेगा, add layer mask करके. Whenever you will click on it, you can see अपनी लेयर पे एक एक्स्ट्रा वाइट कलर का शेप आ गया. ओके, मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ क्या है. आप अपनी लेयर सेलेक्ट करें. दिस इज माई लेयर. सी इफ आई हाइड इट तो वो नहीं दिख रही है. तो ये आई बटन से अपन उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं. ओके, तो राइट नाउ यू कैन सी आई एम ऑन दिस लेयर एंड मैं मास्क दबाऊंगा एंड अभी एक मास्क बन चुका है. ठीक है, अब इस मास्किंग कैसे काम करती है ये एक अच्छा टॉपिक है. मैं आपको एक उसको समझा देता हूँ एक बार में. Let's just make a new canvas and yeah. So मैं इसको पहले एक कलर से फिल कर लिया.
राइट नाउ आई एम मेकिंग अ सॉलिड कलर लेयर सो दैट मैं आपको समझा सकूं. मैं इस पे एक ब्राइट रेड कलर ले लिया. सी, बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेयर पे एक ये बना हुआ आता है, क्या बोलते हैं, मास्क के लिए. बट अगर अपने पास में सिर्फ एक लेयर है एंड मैं इस पर मास्क का बटन दबाता हूँ तो अपन को एक ये वाइट कलर का एक बॉक्स दिखता है, राइट. अब इससे अपन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मास्किंग क्या होती है, आई विल शो यू. बेसिकली अपन को इस फील्ड पे सेलेक्ट करना है. नाउ यू कैन चूज द ब्रश टूल. अब इसके अंदर दो चीजें होती है, आइदर यू कैन गो विथ ब्लैक और यू कैन गो विथ वाइट. अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की ट्राई करना. वाइट से चीजें दिखती है और ब्लैक से चीजें हाइड होती है. ओके, मैंने क्या बोला, वाइट से चीजें दिखती है, वाइट शोज एंड ब्लैक हाइड्स. ओके, सी, राइट नाउ माय फोरग्राउंड कलर इज वाइट. तो और ये इसका भी पूरा ये बॉक्स भी वाइट कलर का, राइट. तो वाइट वाइट के ऊपर वाइट से मैं कुछ पेंट करूंगा तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं. लेट्स जस्ट क्लिक ऑन हिट एंड लेट्स जस्ट चूज ब्लैक कलर. सी, अब मेरा जो वाइट फोरग्राउंड करता है वो ब्लैक हो गया. इट मीन्स अब मैं इस ब्रश से कुछ भी अगर ड्रॉ करूंगा तो ब्लैक कलर का होगा. और मैंने क्या बोला, ब्लैक कलर हाइड करता है, राइट. तो मेरी ऊपर वाली लेयर रेड कलर की है, मेरी नीचे वाली लेयर व्हाइट कलर की है. अगर मैं इस पे ब्लैक कलर से कोई भी मास्क बनाता हूँ तो व्हाट यू थिंक कि क्या होना चाहिए. लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि क्या होता है. जैसे कि मैंने ब्लैक ये ब्रश सेलेक्ट किया है, मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है एंड इफ आई ड्रॉ इट, सी व्हाट इज हैपनिंग. मैं थोड़ा ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ. सी, इस पर मैं ड्रॉ करूँ, लेट्स राइट, क्या हो रहा है, मेरी जो रेड कलर की लेयर है वो इरेज हो रही है, आई गेस वो हाइड हो रही है. तभी पीछे वाली जो नीचे वाली लेयर है वो विजिबल हो रही है, राइट. ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली ओवरलैप कर रही थी ना, राइट. तो मास्किंग में क्या होता है, अगर अपन ब्लैक कलर से किसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उतना पार्ट हाइड हो जाता है. अगर मैं एक ऐसे स्क्वायर बनाऊं, सी, उतना पार्ट हाइड हो गया, ठीक है. और लेट से फॉर अ रीजन मैंने इस पूरे कैनवास को पूरा ब्लैक कलर से, इस छोटे से जो बॉक्स था उसको पूरा ब्लैक कलर से कवर कर दिया. इट मीन्स पूरी मेरी लेयर ही हाइड हो गई. अगर मुझे वापस उसको लेके आना है तो व्हाट आई कैन डू इज मैं उस जगह को वाइट कलर से पेंट कर सकता हूँ, राइट. So now I'm going to select white color and let's just decrease the size. Now this box is filled with black color. अब मैं अगर इस पर व्हाइट कलर से ड्रॉ करूंगा तो व्हाट यू थिंक क्या होना चाहिए, रेड कलर दिखना चाहिए, am I right? क्या लगता है आप लोगों को. तो चलिए ट्राई करते हैं. लेट्स जस्ट सी, CN कोडिंग निंजास, LPU. और मेरा ब्रश थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके लिए थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है, बट या. तो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाइट कलर से अगर अपन किसी भी मास्क लेयर पे पेंट करेंगे तो उसके अंदर जो भी चीज़ है वो विजिबल होगी. और अगर ब्लैक कलर से पेंट करोगे तो जो भी होगा वो हाइड हो जाएगा, राइट. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऑलमोस्ट अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको रोज़ ये डेली काम आती होगी. तो हाँ, तो अपन इसके ऊपर आते हैं, ये अपना मेन टॉपिक ये था. सी, मैंने इस लेयर के ऊपर एक मास्क बना लिया, अभी वो व्हाइट कलर का है, इसके अपन को पूरी लाइन दिख रही है, राइट. मेरे को सिर्फ इसके ऊपर से ये लाइन हटानी है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चूज अ ब्लैक ब्रश एंड आई कैन जस्ट ड्रॉ इट. सी, जो लाइन थी वो आई गेस डिसअपियर हो गई है और आप इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल देख सकते हो. वो मैंने अभी जस्ट पे जब क्लिक किया तो वो तब ड्रॉ हुआ. सी अगेन, अब वो दिख रहा है और इधर कोई ब्लैक कलर का सर्कल नहीं है. अगर मेरे को यहाँ से हटाना है तो आई हैव टू ड्रॉ अ ब्लैक, मतलब मेरे को इस पे ब्लैक कलर से कलर करना पड़ेगा ताकि इतना हिस्सा नहीं दिखे. सो यू कैन क्लिक ओवर हियर, अब वो नहीं दिख रहा. सो ये एक थोड़ा काइंड ऑफ एक डिज़ाइन सा लुक आ रहा है.
लाइक अब मेरे को अब स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग दिस डिजाइन, लाइक बहुत हार्ड सा लग रहा है इसके एजेस। हाँ, अब मैं एक और चीज बता सकता हूँ आपको, जैसे कि अपना ये था, लेट्स जस्ट मेक इट अगेन ब्लैक। मतलब अभी ये अपने पास में रेड लेयर है और इसका मास्क एकदम ब्लैक हो रखा है, राइट? What if I choose a soft brush, soft round brush, and now if I try to paint it over here with a white color, see, can you see the difference between a soft round brush and a hard brush? क्या हुआ इसमें? इसमें सॉफ्ट राउंड ब्रश में जो एजेस अपनी पार्शियली दिख रही थी, तो पार्शियली रेड कलर दिख रहा है और बाकी का पूरा रेड दिख रहा है। हार्ड ब्रश में वो पूरा ही हार्ड है, तो जितना जहाँ जहाँ आपने ब्रश से पेंट किया वो आपको उतना हिस्सा दिखेगा। तो इससे why I'm showing to you, see, what we can do is we can choose a black color, and what if we dab over here with a black color. Oh, sorry, this is a hard brush, I want a soft brush, and let's make it a little big. And now if we click over here like this, तो क्या आपको एक सटल सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लाइन हार्शली मिट नहीं रही है और एकदम से अंदर नहीं आ रही? इट्स, आई गेस इट्स लुकिंग फाइन राइट नाउ। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड मैनी ऑफ यू हैव सीन लाइक बहुत सारे आपके डिज़ाइंस पे बैकग्राउंड में बहुत एक स्टार शेप बना हुआ होता है, राइट? मे बी इस यूट्यूब के थंबनेल में भी वो बना हुआ था। हाउ यू कैन मेक इट, हाउ यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ शेप, you can just do it like you can select a pen tool and you can make a slant line. With the help of shift you can do it, like just press shift and click over here, so you will get a perfectly slant line 45-degree. Now what you can do is you can just uh, you can choose this you can just copy this line again by pressing alt and dragging that line. How to copy a line, how to copy anything in the Photoshop? You can just do like Control C and Control V, it will also work. But another smart way is doing just press Alt and drag that thing, so it will make a copy of that. Cool. So yeah, I guess the thickness should be little big, little more. So you can just press this pen tool and you can adjust the thickness from here. Mm, yeah, looks fine to me. And now you can choose one line. Okay, you can choose one line and you can press Control T and you can make it like this way, and you can align both the lines over here, both the lines like this, and there you go, you got a cross shape like this. Now what you can do is you can select this both layer. Okay, let me make it little big. ये दोनों जो लेयर्स है, शेप टू एंड शेप टू कॉपी, ये अभी अपन ने बनाया। लाइक सी, मैं इनको हाइड करूं तो ये हाइड हो जाएंगे, ये अपने दो लेयर्स है, राइट? बट ये अभी दो अलग अलग लेयर्स है। अगर आपको इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है, व्हाट यू कैन डू इज सेलेक्ट बोथ द लेयर्स, ठीक है? जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यू गेट दिस ऑप्शन, मर्ज शेप। सो इफ यू डू दिस, अब देखो आपकी दोनों लेयर्स मिक्स होके एक लेयर बन गई है। सी, इफ आई हाइड दिस तो the पूरा शेप हाइड हो रहा है। Now you can resize it and you can, I guess, नहीं, पहले इसको resize करने से पहले we should convert it to a smart object. Okay, what is a smart object? Basically right now it was a shape. Smart object अगर मैं अभी आपको explain करूँगा, I guess ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, because I guess अभी अपन में बहुत सारे beginners हैं जिन्होंने Photoshop इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको कभी और नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि बेसिकली क्या होता है। बट या यू कैन जस्ट मेक इट अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, just right clicking on the layer and going to this convert to smart object. Okay,
स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नथिंग, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ क्या है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये शेप वापस से मिल जाएगा और आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बट इस लेयर के लिए राइट ना अभी ये थोड़ा फिक्स सा हो गया। अब आप इसको वैसे सी, इफ आई गो टू पेन टूल एंड इफ आई क्लिक ओवर हियर, तो आई, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ इसकी विड्थ को चेंज करने की या कलर चेंज करने के लिए, राइट नाउ आई कांट डू इट फ्रॉम हियर। तो इस लेयर के लिए वो फिक्स सा हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज इट्स नेम सजेस्ट इट्स अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यू कैन double click on this layer, and now if you select pen tool, and now if you try to change the width, see, you can change the width, you can change the color, you can do anything. Okay, so yeah, just convert it into smart object, and now press Ctrl T and just make it a little bit small, and you can place it you can place it you can use it to fill the background, or like you can rotate it a little bit. To rotate it, you can press Ctrl D, and then see, you will get this type of, this type of cursor over here, and you can use it to rotate the object. Cool. So let's just rotate it a little bit and place it over. Yeah. So you can rotate it a little bit and you can place it over here, some here. You can press Alt and you can drag it again to make it here, to keep it here. And let's say you want to change the color of this thing, so you have 2 and 3 options from which you can change the color of this layer. One and very easiest way is you can double click on this layer. You will get this layer style dialog box. Okay, how we got it? Let's say you want to change the color of this layer. Just select this layer. See, I am on this layer. Just double click on this layer, and you can go to this color overlay. Okay, by default this is like light blue and I think it's looking nice. So yeah, let's make it in that color. See, effect is applied on this layer, that's why this color has changed. If you hide this, see, it will again come to its original color, that is white. Okay, so you can make it like this. If you want to keep it as white, it's totally your choice, but I want to change its color, like I want to change its color to something dark. Let's see how it looks. बेसिकली इसका कोई प्रॉपर एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको कलर स्कीम के बारे में इतना नहीं पता, मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप जाओ कलर आप बार बार चेंज करके देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। आपको तब पता चलेगा कि यार इस कलर के साथ में ये कलर अच्छा लगेगा, इसके साथ वो लगेगा। तो ऐसे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अब दूसरों का काम देखो कि दूसरे लोग कैसे कलर्स यूज कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। So if I choose a dark bluish color, so I guess it's not looking that much nice, but let's try to change the opacity. Yeah, I guess it will work. Basically, it's just thing to fill your background, right? इस पे इतना मतलब फोकस नहीं पड़ना चाहिए आपको, एकदम ही ऐसे नहीं अपने टेक्स्ट के पास में ला के रख दिया। ये बस आपका जो सिंपल सा, अगर लेट्स से अगर अपना सिंपल सा बैकग्राउंड होता, तो उसको फिल करने के लिए अपन को कुछ एलिमेंट्स चाहिए। अगर आप प्लेन बैकग्राउंड लगा दोगे तो इट वोंट लुक नाइस। तो उसको सिर्फ फील करने के लिए अपन को कुछ एलिमेंट्स चाहिए छोटे मोटे, एंड दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। ओके, तो आप इसको भी मेरे को एग्जैक्ट ये जो अलाइनमेंट है ना, जिसे क्रॉस लग रहा है, ये दिखने में थोड़ा और लगता है। तो आप इसको थोड़ा रेंडमाइज करके, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज करके, एंड इसको थोड़ा सा छोटा करके आप ऐसे रख सकते हैं। रैंडमाइज चीज थोड़ी दिखने में अच्छी लगती है। कूल। सो अपना ऑलमोस्ट हाफ पोस्टर इज रेडी।
you can do another main thing is like the branding, like we are making for our coding ninjas LPU. So for that we should mention the handle of our Instagram, right? So you can you can just select this type tool and you can click over here of coding ninjas.lpu. Okay, and to make it in center, just you can click on this button to align it in center, right? And I guess it's looking little off right now. What we can do is let's change the color. What I just did is I just double clicked it, so to choose whole text, and now I can go to color and I can change it like this. The color is changed. Another way is if you just think, if you want to copy this color, how will you copy that color to this text? You can do is just choose the whole text. You can go to this color box and you will s- you will see a this eyedropper tool, right? You click on that color that you want to copy and it will automatically select that color and apply that color to your layer, right? So I guess it's little big, so make it like 16 something. Yeah, and we can do one more thing. We can do like we can type follow us on. तो हाँ, मैंने क्या किया अभी? I did nothing. I just press Alt and I drag that layer to make a copy of that layer. And I just typed, select the whole text and type whatever I wanted. So yeah, just make it little small because we have to make focus on coding in just LPU. Follow us on is an extra thing. We can make it small and yeah, I guess it's looking fine to me. And we can use some kind of cot or means other elements like some kind of beaker, test tube, carbon bonds, anything related to science. We can use it over this space to fill the space, or you can use any code that is given by CV Raman or like that. So in this way, your one poster will be ready in few minutes. ये तो मैं आपको explain कर रहा था, इसके लिए took time, but ये अगर आप बनाने बैठेंगे तो it will probably take your 20 or 25 minutes like that. Now coming to the another, नहीं, you, which spelling? Guys, don't focus on spelling. Come on यार, ये तो आप अपने से कर सकते हो. मेरे से हो जाते कभी कभार मिस्टेक. ओ वो टाइपो हो गया, सॉरी, गलती से हो जाते हैं ना, होता है गाइस, सॉरी सॉरी. या तो स्पेलिंग रेंज तो सब ठीक है. गाइस फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, फोटोशॉप कॉन्सेप्ट्स. ओके, कम ऑन. तो अपना एक मॉडर्न लुकिंग एब्स्ट्रैक्ट सा एक पोस्टर यहाँ से रेडी हो जाएगा. एंड इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू वी कैन मेक टू टाइप्स ऑफ पोस्टर. लाइक एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सा बना सकते हैं. अनदर वन इज अपन सीवी रमन की फोटो यूज करके वी कैन मेक समथिंग रिलेटेड टू दैट, राइट? तो फॉर दैट, चलो लेट्स ट्राई टू मेक इट दैट. तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और इसमें भी आई गेस आपको थोड़ा सा कुछ न्यू चीज सीखने को मिलेगी. Let's just click on this and make a new project file, and let's just go to this aspect ratio and this settings and create new. And yeah, let's go to Google and search. Let's search some of images that we want.
Mm, okay, I think it this one will look nice. Let's just copy it, copy image and control V. What we did, we just copy image and copy image and we just pasted it. Control V. By the time I press two times of control V, so it's there for two times. Yeah. Uh, let's just increase size by control T, by pressing control T and holding shift and alt to increase it in all the direction. If I just increase it, just say if I'm just see right now my hand is in air. If you just drag it, तो ये सिर्फ vertically increase हो रहा है. If you drag it like this, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होगा. टू मेक इट गुड एंड वो एक एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेच्ड फील नहीं होने के लिए, यू कैन प्रेस ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड देन यू कैन ड्रैग इट. सी अब ये परफेक्ट रेशियो में बड़ा हो रहा है, राइट? सो आई थिंक this much size is good. Let's align it like here and let's increase it a little bit more. Yeah. एंड अपन को सिर्फ इनकी फोटो से काम है. वी डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा टेक्स्ट ओवर हियर, सीवी रमन एंड हिज डेट ऑफ बर्थ. व्हाट वी कैन डू इज, अभी मैंने आपको एक मास्किंग का समझाया था कि अपन मास्क करके चीज़ों को हाइड या फिर शो कर सकते हैं, राइट? तो राइट नाउ अपन को इतना पार्ट नहीं चाहिए, राइट? इतना पार्ट नहीं चाहिए, इतना पार्ट आपको हाइड करना है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लिक ऑन दिस मास्क बटन. तो एक ये मास्क लेयर एक्टिवेट हो जाएगी, राइट? एंड नाउ वी कैन ड्रॉ with a black color. Yeah, just choose brush and choose a black color. Okay, and now if you try to draw it over here, तो वो ऐसे मास्क होके वो पार्ट हट जाएगा. आप ड्रॉ करने के लिए अगर आपको लगे तो आप एक हार्ड ब्रश भी ले सकते हो, तो ये ऐसे होके हट जाएगा, राइट? कूल. और अनदर वे, ठीक है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट हिम, अगर हाँ एक और चीज कि अपन को ये हटाना नहीं है. Wait a second. अपन को सॉरी अपन को ये हटाना नहीं है. व्हाट इफ यू वांट टू सेलेक्ट द इमेज फ्रॉम दिस एंड वी हैव टू रिमूव द बैकग्राउंड, राइट? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट हो जाता है टू मेक अ गुड सिलेक्शन. आपको आप जब भी पोस्टर या फिर कुछ बनाते होंगे तो आपके पास में बहुत बार ये आता होगा कि यार फोटो तो ये अच्छी लग रही है मेरे को, बट yes, you are right, we can select it and then you can mask it. So we have few options, like you can choose this object selection tool, and by selecting this layer you can go to select object, select subject. तो ये एआई और न्यूरल इमेजिंग सब यूज करके ये ऑटोमेटिकली ये आपके सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा. एंड नाउ वेट अ सेकंड. हाँ, जब ये सेलेक्ट कर लेगा देन नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस मास्क लेयर. तो वो सिर्फ इमेज सेलेक्ट होके बाकी सारा पार्ट हाइड हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो डिलीट हो गया, इरेज हो गया. वो है, सी वो अभी भी है, जस्ट बिकॉज वो मास्क लेयर के नीचे हाइड हो चुका है, बस. इट्स लाइक दैट. आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें अभी भी एक ब्लैक कलर की लाइन आ रही है. बहुत बार होता होगा कि ये हेलोज आपकी इमेजेस में रह जाते होंगे और ये दिखने में थोड़े और लगते हैं और आपके डिज़ाइन को खराब कर सकते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज whenever you select a subject, see मैंने वापस से select subject पे क्लिक किया, एक selection बना. what you can do is you can go to select option and then you can go to this modify option and then you can go to this contract. बेसिकली क्या करेगा, आपका जो सिलेक्शन बना है ये थोड़ा सा उसको छोटा कर देगा. तो आपको कितने पिक्सल छोटे करने हैं, लाइक आई गेस 2 or 3 पिक्सल विल बी फाइन. मैं 3 पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अब मैं इसको मास्क करता हूँ. जस्ट अ सेकंड.
मेरे को वापस आना पड़ेगा. Going to this select, modify, contract, 3 pixels. Okay. Now when I will click on this mask, I guess थोड़ा तो इफेक्ट हुआ है, लाइक ऊपर से ब्लैक कलर गया, बट स्टिल देर इज फ्यू. सो वी हैव टू डू इट अगेन. अपन को 3 पिक्सल नहीं, अपन को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा दिस टाइम. वी शुड गो विथ सम काइंड लाइक 6 पिक्सल्स. वो 6 पिक्सल्स अंदर हो जाएगा, सिलेक्शन उसका छोटा हो जाएगा. और एंड नाउ इफ वी क्लिक, या यू कैन सी दैट देयर इज नो ब्लैक आउटलाइन ऑन इट. तो ऐसे एक आपको पास एक अच्छा सा सिलेक्शन आ सकता है एंड आपकी डिज़ाइन ओवरऑल बहुत अच्छी दिख सकती है. तो अपन इसको एक पहले पोस्टर को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं. तो यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड यू कैन गो एंड चूज सॉलिड कलर. And I want to go a little dark this time. Let's choose some this shade. I guess it will look nice. Let's start. Okay. एंड आपको अभी थोड़ा सा ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, जब बैकग्राउंड इतना डार्क है और अपने सीवी रमन जी की फोटो इतनी लाइट है, तो इट माइट बी लुकिंग लिटिल ऑड. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन use gradient mask, gradient map, I think. Yeah, you can go to this, you can click on this button and you can choose a gradient map. Gradient map आपके मन में होगा कि ये नई चीज़ क्या है, ये क्या होती है. तो let me explain you with the example. Just go to this and choose gradient map. तो आपके पास में एक नई लेयर आ जाएगी जिसका नाम होगा gradient map. एंड एक प्रॉपर्टीज विंडो होगी एंड उसमें 2 कलर्स का ग्रेडियंट होगा, राइट. ग्रेडियंट से आप समझ रहे हो कि बेसिकली क्या है, 2 कलर. ओके. तो राइट नाउ ये ब्लैक एंड वाइट और सेलेक्ट हो रखा है. इसके लिए अपना पूरा कैनवास और आर्टबोर्ड पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है, राइट. अपन को ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत एक मज़ेदार चीज़ कह सकते हैं. लाइक यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस and you will get this dialog box and now you can select 2 colors. Let's say I am going with some kind of reddish color and white को अपन चेंज करके तो डार्क ब्लूइश सा कर देते हैं. ओके. तो ये अभी दिखने में थोड़े अजीब सा लग रहा है. यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है. हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है. बेसिकली अपन 2 कलर सेलेक्ट करते हैं और ये कैसे उसको मैप करता है, ये कैसे उस लेयर पे अप्लाई करता है. इट वर्क्स लाइक एक कलर हाइलाइट्स में जाता है और एक कलर जो डार्क्स होते हैं इमेजेस के उसमें जाता है. तो बेसिकली अपना जो अभी रेड कलर है वो ब्लैक कलर के ऊपर लग गया है और जो अपना डार्क ब्लू कलर है वो वाइट और हाइलाइट्स पे लग गया. तो ये इतना ऐसे नेगेटिव सी इमेज लग रही है. वो पुराने फिल्म रोल्स में, पुराने कैमरेज में आई थिंक यू गाइस हैव सीन दिस नेगेटिव इमेजेस. तो ये इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चूज दिस रिवर्स बटन. आप जैसे इस रिवर्स पे करोगे तो ये थोड़ा सा चेंज होके अब जो हाईलाइट्स है वो रेड हो गए हैं, रेडिश कलर के हो गए, और जो अपने ब्लैक्स है वो डार्क ब्लूइश कलर के हो गए, राइट. तो राइट नाउ यू कैन सी द चेंज. ये लेयर ने अपनी फोटो को कैसे इफेक्ट किया और क्या चेंजेस किए. तो दिस इज व्हाट ग्रेडियंट मैप इज. और इसके बहुत सारे यूज है. इसको मैं इसके यूजेस बताने के लिए तो आई गेस एक पूरा दिन लग जाएगा. इसको आप इनफाइनाइट वेज में यूज कर सकते हो. सो इसको अपन थोड़ा सा और ट्विक करते हैं. मेरे को अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है. तो लेट्स जस्ट मेक इट लिटिल बिट like this, something pinkish reddish tone. And yeah, and the blue, just make it little bit more darker. Yeah, अभी के लिए let's go with this color. And one more thing, आप जब भी कोई सब्जेक्ट को अपने डिजाइन के ऊपर लगाते हो, डोंट यू थिंक ये जो हार्ड एज है, लेट मी शो यू, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ.
ये जो हार्ड एजेस है ये दिखने में थोड़ी सी ऑड लगती है, लाइक ऊपर आ रही हार्ड एजेस तो फिर भी समझ में आती है बिकॉज वो तो पर्सन की एज आ गई, बट ये जो ऐसा लगता है कि यहाँ से फोटो कट गई है, राइट। ये जो नीचे वाली एज है और जो साइड वाली एज है, ऐसा लगता है फोटो कटी हुई है। टू मेक इट सटल और दिखने में एस्थेटिक, यू कैन डू इज you can choose a soft round brush, and then you can mask it little bit, like उसको थोड़ा सा फेड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लिया, वापस से करके दिखाता हूँ व्हाट आई डिड। मैंने एक सॉफ्ट राउंड पहले ब्रश सेलेक्ट किया, एक सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट किया, मैं मास्क पे गया उस लेयर के। अगर ऑलरेडी एक मास्क बना हुआ है तो अपन को उसी मास्क पे जाना है, अगर मास्क नहीं है तो अपन मास्क बना सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, राइट। तो राइट नाउ तो अपन ने इनको कट आउट किया था, तो एक मास्क अपने पास है। तो इस हार्ड एज को सॉफ्ट बनाने के लिए यू कैन जस्ट ड्रॉ इट विथ यूजिंग ब्लैक कलर। सी, अब जो एक वो हार्ड एज थी, आई गेस दैट इज नॉट विजिबल, एंड एक एक फेडिंग सा इफेक्ट आ रहा है, राइट। सो ये दिखने में कंपैरेटिवली बेटर लगता है उस हार्ड एज के। एंड या अभी व्हाट आई थिंक इज कि इनकी जो इन पे जो पिंक स्टोन है वो कुछ ज़्यादा दिख रहा है, एंड कुछ मतलब अपन को थोड़ा सा इमेज को कलर में चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर दैट वी कैन डू इज वी कैन गो टू दिस option and we can choose a curve adjustment layer. Basically in this option you can get every adjustment layers that you want. By the name you get it, it's an adjustment layer, so it with you can adjust the image color by using this layer, right? तो जैसा आपने इसको सेलेक्ट किया तो यू विल गेट दिस ग्राफ काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये जो नीचे वाले कलर्स है इट्स फॉर डार्क्स, एंड जो ये ऊपर आ रहे हैं इट्स फॉर लाइट्स हाइलाइट्स, एंड जो ये बीच में है इट्स फॉर मिड मिड टोन्स। तो बेसिकली अपने इमेज में तीन टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, मतलब तीन लाइट्स, मतलब तीन न्यूमेस व्हाट वी से तीन टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, अपन यही बोल लेते हैं अभी के लिए, समझना है अपन को बस। तो बेसिकली ये डार्क कलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए इधर पॉइंट लगता है, ये मिड टोन्स के लिए होता है इस जगह पे, एंड ऊपर जगह पे लाइट्स और हाइलाइट्स के लिए होता है बेसिकली। सो अपने अपन को क्या करना है बेसिकली कि वी कैन सी दैट उनके उनके सर पे और बहुत जगह पे हाइलाइट्स कुछ ज़्यादा है, तो वी कैन डिक्रीज इट। तो वी कैन टेक दिस ग्राफ लिटिल डाउन, तो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। एंड या मिड टोन्स को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड आई गेस बाय दिस टाइम इट्स लुकिंग गुड। पहले ऐसा था, वेरी मच शाइनी, वेरी मच हाईलाइटिंग, and now it's like this. So I guess it's looking nice for now. बेसिकली अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपने पास में आराम से टाइम होता है, वी कैन प्ले इट अराउंड अपन कलर्स को भी और बाकी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मेरा मोटिव तो बस ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, और अब इस सेशन में मैं इतना सिखा दूँ कि आप अभी बैठ के थोड़ी देर के बाद में आप फोटोशॉप खोलें एंड आप खुद से बनाना स्टार्ट कर सकें, राइट। So yeah, this is done, and now we can start applying text on this thing. We can write like mm, we can write like 28 and just make it a little bit huge, something like this. Let's increase it. Let's increase it a little more. Just a second.
make it 100 pixels. Look like this. You can align it like here. I think we should make it a little bit more, like 120, I guess. Better. What if we go with 130 pixels? Yeah, cool. So 28th Fab. mm, Just you can copy this again and you can type Fab and you can make it little small like this, or you can write 25th Feb 2020 and let's go a little bit more small and try to place it over here, and let's just increase some spacing between the letters. Mm, yeah, looks fine to me. And 28th Feb, or and now we can type the main text, that is National Science Day. Now you might be thinking कि text दोनों mix up क्यों आ रहे हैं, तो what you can do is you can select the layer and you can use this option to manage the distance between two lines. ये बेसिकली इसमें अगर आप हायर वैल्यूज डालोगे तो दो लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ेगी, अगर आप उसको कम करोगे तो वो दोनों लाइंस पास में आ जाएगी, राइट? सो यू कैन वी कैन चूज समथिंग लाइक 24 I guess, or let's make it 26. Cool. We can place it over here. Now I guess it's looking a little bit boring because her text white hai. We can choose some kind of color, like we can select this and let's try to give some nice bluish tone. Or what if we go with the pinkish, जो मैंने इनके फेस के ऊपर जो कलर यूज किया है, what if we try to go with that. तो ये थोड़ा सा पिंकिश में ऐसा लगेगा एंड ब्लूइश में ऐसा लगेगा. ओके, मेरे को ब्लू वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी. इसको भी अपन ब्लू करने की ट्राई करते हैं. बेसिकली क्या किया अपन ने, वी जस्ट डबल क्लिक इट एंड वी गॉट दिस, we just select this text and yeah, we can choose the color from here. See, तो ये भी थोड़ा कलर चेंज हो गया. आई गेस इसमें अपन ने स्पेस दे दी थी. ओके गुड. Let's align it in between. And yeah, main thing, let's go and take our logo, and by pressing control and alt, we are just making it a little bit small. And yeah, cool. And I think we can do something more because background थोड़ा plain सा लग रहा है, right? mm, Background थोड़ा plain सा लग रहा है. What we can do is, uh, okay, one new thing I want to tell you guys that अपन background को fill up कर सकते हैं. बताऊँ कैसे? Text के साथ. Like just type national science, और you can type anything related to the poster. जैसे कि अपन नेशनल साइंस डे पे बना रहे हैं तो मैंने नेशनल साइंस डे लिख लिया. We can write CV Raman, or we can write anything related to it. And what we can do is we can make it little bit. Go for it. Yes, Tyagi. Okay, cool. So we can make it little bit big. Just what I did is I pressed Control T to turn on the transformation, and by pressing Shift and Alt, I just dragged it. Right, just make it a little bit big and nice and very big. Right.
uh, like this. I think it's looking good. By the time you guys might be thinking कि ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट तो आधा ही दिख रहा है, अपन को पूरा नहीं दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, अपन को ये टेक्स्ट पूरा नहीं दिखाना है, अपन को एक टेक्सचर दे रहा है बैकग्राउंड में. ओके, तो यू कैन यूज दिस मेथड टू गिव अ टेक्सचर. बेसिकली अभी अपन ने क्या किया, अपन ने एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट बना लिया. नाउ यू कैन सी दिस फिल बटन, राइट. आप इसको फिल को एकदम जीरो कर दो, तो वो आपको कुछ दिखेगा नहीं. कहाँ गया, मैं थोड़ा फिल को बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा. सी, ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है. अभी मैंने फिल को 17 पे रखा है, 21 पे रख देता हूँ तो थोड़ा दिख रहा है. ठीक है. वॉट आई एम डूइंग इज, मैं इसका फिल को एकदम जीरो कर दे रहा हूँ ताकि ये ना दिखे. उसकी ओपेसिटी कम नहीं हुई है, उसका फिल, उसके अंदर के कलर जो है वो मैंने हटा दिया, राइट. अब मैं इस पर डबल क्लिक किया. नाउ आई एम गोइंग टू दिस स्ट्रोक ऑप्शन. बेसिकली स्ट्रोक से क्या होता है, एक आउटलाइन आती है, राइट. मैंने एक आउटलाइन बनाई. आई एम जस्ट सेलेक्टेड दिस स्ट्रोक. मैंने 2 पिक्सल की एक आउटलाइन बनाई. आई सेलेक्टेड अ वाइट कलर एंड ओके ओके कूल. हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने व्हाइट कलर की बनाई फिर भी पिंक क्यों आ रही है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट मैप. ये ग्रेडियंट मैप के ऊपर है, मतलब ग्रेडियंट मैप इन सब के ऊपर है, इसके सबके ऊपर कलर हो रहा है. तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं इसमें, यू नो, वी कैन डू वन थिंग इज दैट, ये जो ग्रेडियंट मैप है अपन को सिर्फ वो इमेज के ऊपर चाहिए, राइट. राइट नाउ दिस कलर इज गोइंग ऑन एवरीवेयर. या अभी मेरा पीछे का बैकग्राउंड वाइट होता, अगर लेट्स से मैंने अभी बैकग्राउंड वाइट कर लिया, मैंने ये डार्क ब्लू वाली कलर लेयर को हाइड कर दिया, राइट. तो इसने अब क्या किया, इसने वाइट बैकग्राउंड को भी पिंक कर दिया. दिस वॉज हैपनिंग विद आवर टेक्स्ट ऑल्सो. अपन को ये एक लेयर जो ग्रेडियंट मैप है, अगर सिर्फ अपन को इस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, what we can do is we can clip it. How we can clip it, we can press alt and we can click between this two layers. So you can see there is my cursor has changed. अब वो एक lower arrow बना हुआ आ रहा है, right. तो अपन इस पर क्लिक करके you can clip it to this object only. आपको डिफरेंस दिखा, पहले इसने पूरी लेयर को सेलेक्ट कर रखा था, इसका इफेक्ट, इस ग्रेडियंट मैप का लेयर इफेक्ट पूरी लेयर पे हो रहा था. बट जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका इफेक्ट सिर्फ उसके जस्ट नीचे वाली लेयर पे होगा, बाकी सब पे नहीं होगा. देखो, बाकी वो जो व्हाइट था वो वापस से व्हाइट हो गया, राइट. तो दिस इज अनदर वे. ये क्लिपिंग मास्क बोलते हैं इसको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज होती है. तो मैं आप अपना बैकग्राउंड वापस से विजिबल कर देते हैं एंड या लेट्स, इस जो अपन ने जो इतना बड़ा टेक्स्ट बनाया इसको अपन एकदम नीचे ले जाते हैं, जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि ये बैकग्राउंड पे आ जाए. ओके. और वी कैन डू इस, इसके अपन मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं. हाउ वी कैन मेक अ मल्टीपल कॉपीज, यू कैन जस्ट ड्रैग इट, प्रेस ऑल्ट एंड जस्ट ड्रैग इट. इसको थोड़ा सा अपन वेरिएशन दे देते हैं, लाइक थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसे रिपीटेटिव ना लगे. ओके कूल. सो you can again drag it like this and you can again drag it. आप तब तक कर सकते हो जब तक आपकी पूरी स्क्रीन फिलअप नहीं हो जाती. तो ये मेरे को थोड़ा रिपीटेटिव लग रहा है, तो मैं ये वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा अपन स्लाइड करा लेते हैं ताकि इतना रिपीटेटिव सा ना दिखे एंड थोड़ा सा वेरिएशन हो. सो राइट नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज, अपने पास में इतनी सारी टेक्स्ट लेयर्स हो गई है जो एक दूसरे की कॉपीज है. और ये थोड़ा दिखने में मैसी सा लग रहा है कि ये क्या कर दिया. पहले तो फिर भी सिंपल वाला तो फिर भी ठीक लग रहा था, बट वेट, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने जितनी भी लेयर्स बनाई थी अपन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं. सेलेक्ट कैसे करते हैं, सबसे लास्ट वाली लेयर को सेलेक्ट किया. ओके. एंड जिस लेयर तक आपको सेलेक्ट करना है उधर जाके शिफ्ट प्रेस करके उस लेयर पे दबाओ, तो उन दोनों के बीच की सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएगी. सी, हर लेयर सेलेक्ट हो गई है. नाउ यू कैन प्रेस Ctrl G टू मेक अ ग्रुप ऑफ दैट लेयर्स. अब इस ग्रुप के अंदर सारी लेयर्स आ गई है और मैं इस ग्रुप को
हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ। इस ग्रुप की मैं ओपेसिटी भी कम करता हूँ, तो सबकी एक साथ कम होगी। See, मैं इसको एकदम लाइट सा इतनी ओपेसिटी रखूंगा कि पीछे दिखे टेक्सचर थोड़ा सा आए, बहुत ज्यादा भी ना आए कि मतलब सिर्फ सारा ध्यान अपना पीछे बैकग्राउंड पर चला जाए, बट प्लेन ना दिखे। Okay, and we can do one more thing. See, if you select a text layer, let's select all the text layer and press Ctrl P. So you are getting a selection like this. You can press Ctrl and you can click on this middle button and you can drag it. तो टेक्स्ट आपके थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे। आई गेस अभी आप लोगों को विजिबल नहीं होगा क्योंकि उनकी ओपेसिटी कम है। वेट, लेट मी इंक्रीज द ओपेसिटी। या कूल, अब सब चीज़ विजिबल है। अब इसको वापस से करके दिखाता हूँ। सी, अपन ने सारे टेक्स्ट सेलेक्ट किए, अपन ने कंट्रोल टी दबाया। इफ यू प्रेस कंट्रोल and click on this middle button and you can make them little tilted, right, like this. I guess it will look fine. And थोड़ा इसको अपन ऊपर ले लेते हैं ताकि ये ऊपर का जो थोड़ा सा एरिया कवर नहीं हो रहा वो भी हो जाए। फाइन टू मी। अब इसकी ओपेसिटी फिर से कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को, मतलब मैंने ओपेसिटी बेसिकली आप लोगों को दिखे इसके बढ़ाई थी। maybe maybe 20 or something. Yeah, cool. And what we can do is अपन इसमें ना दो, अपन इसको थोड़ा फिलअप करने के लिए we can use some quotes by CV Raman. Yeah, we can do it. Let's type. Okay. तो बेसिकली अपने अपन को ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना रहता है पोस्टर्स में। बेसिकली कोई ध्यान भी नहीं देता है इतना। अपन आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भर दोगे तो नो वन इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग और नो वन इज गोइंग टू रीड। सो जस्ट ट्राई टू सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कोट। I guess this one is the smallest one. Just copy this and yeah, you can choose text tool and you can click over here. Okay, basically what is happening, वो जो पीछे वाला बैकग्राउंड लेयर है ना उस पे क्लिक हो जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस लेयर को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर सकते हो, ना हाइड कर सकते हो ताकि उस बार बार उस पर क्लिक ना हो। राइट, now you can click on this text tool and you can press Ctrl V to paste it. Okay, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन में पेस्ट हो गया। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बॉक्स, इसको ड्रैग करके एक बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको ड्रैग करके इतना बॉक्स बना लिया एंड नाउ इफ आई ट्राई टू क्लिक कंट्रोल वी तो इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें पेस्ट होगी। राइट, अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा विजिबल हो जाए। ओके कूल, सब चीज़ विजिबल है बट ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आई डोंट लाइक द टेक्स्ट the basically the fonts, so we can change the font, like क्योंकि एक कोट है तो आई गेस अपन थोड़ा कर्सिव राइटिंग फॉन्ट में जाए, मे बी इट विल लुक फाइन। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया आई गेस, थोड़ा बड़ा करते हैं एंड लेट्स सी कैसा दिखता है। let's try to let's try some other fonts. एंड हाँ, अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये कौन सा फॉन्ट है, ये कहाँ से मिलेगा, हमारे पास नहीं है। बेसिकली सबके लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। what you can do is you can go to Google and you can type something like you can go to the site, basically one of the best site is the fonts, I guess, thefont.com.
You will get tons and tons of fonts over here. There are different types of fonts like this. See, you can download and you can install this OTTF file, and then you will be able to use it. Should I show you guys how to download and install this font files? Let's be a quick. Just click on this download, and then this file will be downloaded. Then double click and open it, and click on install. That's it. Uh, the name of this is Scarlet. Okay. Let's go and select this text, and now you just search that font that you have installed right now. See, you got this, and okay. So in this way, you can select different kind of fonts and different things, and you can try different whatever is looking good to you, what is looking good for a poster, and I guess it's little looking little bit boring, but still you can try by your own. आप जाके आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है फॉन्ट. आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको छोटा करके देखते हैं. ओके, अपन से just now we are just doing a hit and trial, and this is how things work. You have to try it again and again. कौन सा अच्छा लग रहा है, which is looking good, and that's right. Let's write CV CV. Uh, and let's keep it over here like this. And again, the same thing. We can put our Instagram uh, handle, coding ninja, coding ninjas dot LPU, and let's change the font to Paco Babers. Okay, and let's just align it in center. Let's increase the size of it, like something 16 will look good. And follow us on. Let's make this follow us little small. Let's make it 12 pixel looking fine. और what we can do is अपन इसका gradient map का color थोड़ा bluish करके देखते हैं. Let's see how it looks. थोड़ा सा bluish tone. I think let's go with it for now. थोड़ा यूनिफॉर्मिटी आ रही है. पहले मेरे को लग रहा था कि पिंक एंड ब्लू टू डिफरेंट शेड्स. राइट नाउ we are having only two colors, that is dark and light blue. Let's just turn on our background. तो अपन ने टेक्स्ट बनाए थे, एंड एक और चीज़ कर लेते हैं. लेट्स मेक अनदर सॉलिड लेयर, एंड इसको अपन एक्सट्रीमली डार्क ले लेते हैं, एकदम डार्क लाइक दिस. ओके, और इसको अपन थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं दूसरी लेयर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, अपन एक अगर आप बेसिक फोटो एडिटिंग जानते हैं तो एक विग्नेट इफेक्ट होता है जिसमें साइड्स थोड़ी डार्क होती है एंड बीच का पार्ट थोड़ा लाइट होता है, वो ग्रैब द फोकस, राइट. तो इसके लिए मैंने एक नीचे वाली
नीचे वाली लेयर को थोड़ा डार्क ले लिया, लाइक ऑलमोस्ट वेरी डार्क ब्लू कलर, एंड ऊपर वाली को थोड़ा लाइट रखा। अपन ऊपर वाली पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले अपन पूरी, एंड बेसिकली ये मास्क वाली लेयर है, राइट? You can use brush tool, and first let's make it completely black. What I did, मेरा foreground कलर black था, तो मैंने Alt and Backspace दबाया, तो ये पूरी black हो गई। ठीक है, Alt and Backspace। Now we can use this soft round brush। हाँ, एक और चीज, ये ब्रश का साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं? You can do it by pressing Alt and dragging your by clicking Alt and right click and dragging it right to left, right? अगर आप राइट साइड जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो साइज छोटा होगा। ओके, तो मैं एक इस साइज का ब्रश लेता हूँ, सॉफ्ट राउंड, एंड या एंड मैं वाइट कलर से इसको पेंट करता हूँ। ब्लैक के ऊपर अपन वाइट कलर कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे उससे अपना जो ऊपर वाली स्क्रीन, ऊपर वाली लेयर है, उसके कलर दिखने लगेंगे, उसमें जो भी है वो दिखने लगेगा, राइट? तो लेट्स जस्ट अच्छा, वो ऑलमोस्ट कलर दोनों सेम हो गए, इसके लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। नहीं, अगर मैं आपको दूसरा कलर से दिखाऊं, अगर अपन कलर चेंज करते तो अपन को डिफरेंस नोटिस हो रहा है, राइट? तो अपन एक उसी टाइप का, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं, और मतलब उससे थोड़ा सा लाइट, लाइक दिस, आई गेस। इसको अपन थोड़ा सा और बड़ा करने की ट्राई करते हैं, बहुत तो आई गेस आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। सी, अगर मैं ये लेयर को बंद करूं तो ये प्लेन डार्क ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड है, बट इफ वी टर्न ऑन दिस तो एक इफेक्ट सा, एक विग्नेट सा इफेक्ट आपको विजिबल होगा। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप इसमें लाइक थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस बच रही है, तो आप कुछ और भी बना सकते हो इसके अंदर। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सो आज के लिए आई गेस ये कुछ किसी किसी को बहुत पूरा समझ में आया होगा, किसी किसी को थोड़ा समझ में आया होगा, किसी किसी ने सिर्फ 10% ग्रैब किया होगा। कोई बात नहीं है, आपने जितना सीखा आप इंस्टॉल करो फोटोशॉप, आप जाओ, आप ट्राई करो खुद से बनाने की, खुद से प्रैक्टिस करो। कोई भी आप कुछ भी, अगर इफ यू वांट टू लर्न दिस फोटोशॉप एंड एवरीथिंग, यू कैन जॉइन आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो आपको उधर टास्क मिलते रहेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप उससे सीखते जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। वी मेड 2 पोस्टर। ये वाला कंप्लीट नहीं है, इसमें आप ऐड कर सकते हो छोटी मोटी चीज़ें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप ट्राई करिए खुद से बनाने की कि कैसे आप फोटो ले सकते हो, कैसे मार्क्स कर सकते हो। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी आज। ओके, नाउ थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो अभी यू कैन आस्क योर डाउट्स, कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो कि हाउ यू हैव डन दैट, हाउ यू हैव डन दिस, या कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो या एनीथिंग, यू कैन आस्क इट राइट नाउ थ्रू आउट द सेशन। कोई भी, पहले बारे में, दूसरे बारे में, या फिर कोई नया डाउट हो अदर देन दिस, अगर कुछ भी पूछना है, गो फॉर इट। ओके, कूल। एनीवन? Okay, so yeah, let's just end today's session now, and I hope you have learned so many things. Cool, cool. Okay, guys, let's just wrap up today's session. So, bye. Have a good day. Take care. Bye.